So in this session of solid mechanics, we'll be dealing with the topic torsion. This torsion topic is important for objective point of view. Direct objectives are being asked from this particular topic. तो अच्छा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, सिविल में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बार बार. So let's start with the understanding that what actually the torsion is. In the earlier classes I told you there are different types of forces. One of the forces is axial force, then it's the shear force, then the bending moment, and after that I told you about torsion also. Torsion is basically the moment which is trying to rotate or twist the body along the longitudinal centroidal axis. Longitudinal centroidal axis. In a body there are different types of axes. Like if this is a body, and for this body you want to see the different types of axes, then the axis can be this. If let's say this is a body, the axis for this body can be different types. Like for example, if you will draw the x-axis, then this will be the x-axis which is passing through the center. Let's say this is passing through the center, which is the x-axis. Also there can be the axis which is y-axis. This will be the y-axis, and there can be the axis which will be the z-axis. This will be the z-axis. Now if you want to compare these axes, this is the axis which is passing through the center. Let's say this is passing through the center, CG of the section, and it is in lengthwise direction. So this is x-axis, and this axis is known as the longitudinal centroidal axis. Similarly, this is the y-axis, and this is the z-axis. If this is the centroidal longitudinal axis, then these two axes will be the transverse centroidal axis. सेंट्रॉइड से तो पास हो रही है, बट ट्रांसवर्स है क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है. अगर आपने बेंडिंग के लिए ऊपर से लोड लगाया था, याद करो, जब आपने वाई एक्सिस से लोड लगाया था तो बेंडिंग हो रही थी इस एक्सिस के अराउंड. बट इन केस ऑफ टॉर्जन द केस इज डिफरेंट. इन केस ऑफ टॉर्जन द केस इज दैट व्हेन यू विल अप्लाई अ टॉर्जनल मोमेंट, then the torsional movement will be somewhat like this. This will be the torsional movement, and because of this torsional movement, this body will twist along this particular axis, which is basically the x-axis. As the body is twisting along this axis is also known as polar axis. Polar axis. I told you that whenever you will try to twist the body along a particular axis, किसी भी एक्सिस के along body को मोड़ने की कोशिश करोगे, तो body उसके against response offer करेगी. जब body उसके against response offer करेगी, तो उस response का मतलब होता है resistance. कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग? जिस एक्सिस के अलॉन्ग उसे घुमाने की कोशिश करोगे. पहले आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग घुमाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग बेंडिंग आया था, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफर हुआ था. बट अभी आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घुमाने की कोशिश कर रहे हो. पंखा देखो अपने ऊपर जो आपके सर के ऊपर लगा है, वो शाफ्ट है इस तरीके से, और वही एक्सिस के बाद घूम रहा है, विच इज अलॉन्ग द सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेंथ वाइज एक्सिस. ये लेंथ है इसकी. इस एक्सिस के अलॉन्ग घुमाते हो तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको बोलते हैं पोलर एक्सिस. एक concept होता है which is known as the perpendicular axis theorem. The perpendicular axis theorem says that if this is a body, if this is the circular shaft or circular body, पहली बात तो circular shaft is circular body का, there are different axes. The axis can be this axis, the axis can be this axis, और एक एक्सिस है जो आपकी तरफ एकदम बाहर निकल के आ रही है फटाफट आपकी तरफ. ये मान लो कंप्यूटर से बाहर आ गई, this is जो बाहर आ रही है, ये हो गई आपकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और ये जो आपके सामने एकदम आपके मुंह के ऊपर आ रही है एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, विच इज द लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रोइडल एक्सिस. व्हेन यू विल ट्राई टू रोटेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जब आप इस शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करते हो तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसी एक्सिस के अलावा. जिस एक्सिस के अलावा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रेजिस्टेंस होगा. मैंने आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली द रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन. फाइन. नाउ दिस आई एक्सिस इज बेसिकली कमिंग आउटवर्ड्स, व्हिच इज टुवर्ड्स यू, इट इज परपेंडिकुलर. तो यू कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम व्हिच सेज दैट आई एक्सिस इज इक्वल टू आई वाई वाई plus I z z. Now we know that if this is the diameter of this particular body, a particular shaft is small d, then I by y will be
pi d4 divided by 64. And similarly, Izz will also be pi d4 divided by 64. It means that the total Ixs will be pi d4 divided by 32. This is known as the polar moment of inertia. बेंडिंग के अंदर अगर आप बात करते थे तो फुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे क्योंकि वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होती थी, ये बाहर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रही है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे जिसकी अबाउट उसको घुमा रहे हो. जब आपने इसको घुमाया तो रेजिस्टेंस इसने ऑफर किया इतना, तो आपने इसको घुमाया था तो बेसिकली आपने एक टॉर्क लगाया था जिस टॉर्क की वजह से ये घूमा था. लेट्स से वो टॉर्क है टी. इस टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए इस बॉडी ने डेवलप किया आईपी विच इज द रेजिस्टेंस. जिस टॉर्क को रेजिस्ट करने के लिए जब बॉडी ने आईपी जनरेट किया तो एक शियर स्ट्रेस, इस टाइप का कोई मूवमेंट हुआ और रिलेटिव, उसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ है जो रेडियली रेडियस के साथ वेरी कर रहा है. तो बेसिकली द इक्वेशन बिकम्स द टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन आईपी. दिस इज इक्वल टू जी इनटू थीटा डिवाइडेड बाय एल. जैसे वहां पे थी सिग्मा अपॉन वाई, एम आप लगा रहे थे, एम अपॉन आई, ये आई क्या था, आई जेड जेड. दिस इज इक्वल टू ई अपॉन आर. द सेम थिंग इज हियर, टाउ की जगह सिग्मा की जगह टाउ डेवलप हो रहा है, वाई की जगह यहाँ रेडियली वेरी कर रहा है क्योंकि आपका रेडियली शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. यहाँ टॉर्क लग रहा है, यहाँ मूवमेंट लग रहा था, यहाँ पे आईपी पोलर की जगह रेजिस्टेंस हो रहा था, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे रेजिस्टेंस हो रहा था. ये शियर मॉडुलस है क्योंकि शियर जनरेट हो रहा है, ये यंग्स मॉडुलस है क्योंकि यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है. This is theta per unit length, which is the rotation. This is 1 upon r, which is the curvature. So these two equations are basically equivalent in terms of basic concept. ठीक, तो टॉर्जन के अंदर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द बेसिक इनर्शिया. टॉर्जन का मतलब द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग, जैसे बेंडिंग मोमेंट का मतलब था रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग विच इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग. जब टॉर्क लगाया है तो बॉडी के अंदर शियर जनरेट हो रहा है, शियर बॉडी अपने आप को रोकने के लिए इंटरनल शियर स्ट्रेसेस डेवलप करेगी, वो इंटरनल शियर स्ट्रेस मिलके साथ में एक टॉर्जनल मोमेंट जनरेट करेंगे, टॉर्जन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. वो टॉर्जन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्सटर्नल टॉर्जन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा. वो टॉर्जन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये शियर को जिस तरीके से वेरी कर रहा होता है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द टॉर्जन. फाइन. अभी शाफ्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. शाफ्ट कैन बी अ सॉलिड शाफ्ट, शाफ्ट कैन बी अ हॉलो शाफ्ट, शाफ्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप. तो if the shaft is a solid shaft, if the shaft is a solid shaft, then the tau max or the maximum shear stress, this will be equal to T upon IP into R. ये होता है T upon IP into R. It means that this will be, अगर ये maximum है तो this R will be maximum, जो outer circumference होगा, this will be equal to, आपको पता है T को ऐसे ही रखोगे, IP का मतलब होता है पाई अपॉन 32 D की पावर 4 इंटू R. R मतलब इट मीन्स दैट दिस विल बिकम 16. अगर आपको निकालना है, दिस इज R max will be D by 2. It means that this will become 16T upon pi D cube, which is equal to tau max. This is the tau max, which is 16T upon pi D cube. For the solid shaft, the maximum shear stress can be calculated like this. This is the maximum shear stress. Similarly, if the shaft is hollow, then in that case, the tau max will be T upon IP. IP का मतलब pi upon 32. This is D naught की power 4 minus D inside की power 4 into D naught divided by 2. So this will become 16T upon pi into D naught की power 4 minus D I की power 4 into D naught. This is the basically value, which is the value of the maximum shear stress, which is that 16T upon pi D naught की power 4 into D naught minus D by 3 I की power 4 divided by D naught. यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ रहे हो, यहाँ पे जो ZP मैं यूज़ कर रहा हूँ, ZP होता है ना I अपॉन, जैसे वहाँ होता है Z I अपॉन, वही चीज़ यहाँ IP अपॉन Y max. This ZP is here pi upon 16 D naught की power 4 minus DI की power 4 divided by D naught external dia. This is ZP here. Now if the shaft is hollow, you know that the relation is this, and the shaft is solid, then also you know that the relation is what? One thing you have to remember, that the shaft is always circular, because if you will use non-circular shaft, then the distribution of shear stress will not be uniform. For example, if you will just take
एक तो आपके पास सर्कुलर है. If you will test take instead of circle, you will consider a rectangular shaft. तो अभी आप rectangular shaft का if you will take the example, then in case of circular shaft, the shear stresses are like this. They are varying continuously, and their variation is like this, which is a linear and same variation altogether. यहाँ भी ऐसे ही होगा. The shear stress will be varying like this altogether all throughout the section. ये एकदम से यूनिफॉर्म है हर जगह. बट द प्रॉब्लम इज दैट विद इन दिस केस द shear stress cannot be uniform बिकॉज ये डायमेंशन लंबी है, ये डायमेंशन छोटी है, तो shear का जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन नहीं आ पाएगा सही से, जिसकी वजह से ये फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से ये मुड़ जाता है, ये टूट जाता है. इसीलिए आप कभी भी फैन पंखा देखो ऊपर, उसका जो शाफ्ट होगा वो हमेशा सर्कुलर दिखेगा आपका. सर्कुलर शाफ्ट होने का रीजन ही ये होता है. एक और चीज़ होती है, जो शाफ्ट होता है वो सर्कुलर तो होता ही है, उसके साथ साथ हॉलो होता है. हॉलो इसलिए होता है क्योंकि हॉलो शाफ्ट की जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है सॉलिड शाफ्ट से. स्ट्रेन एनर्जी का मतलब जानते हैं, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू डिफॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू अप्लाई एनर्जी विच इज मोर देन द इंटरनल एनर्जी और द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द बॉडी. इट मींस दैट द हॉलो शाफ्ट इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड शाफ्ट. अब अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात कर ली है तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ टॉर्जन और इन केस ऑफ शाफ्ट इज गिवन बाय tau square upon 2 into g. This is the strain energy per unit volume. Tau square upon 2g. This is the strain energy per unit volume. If you want to calculate the strain energy for an hollow shaft or for a solid shaft in terms of tau max, ये तो जनरल tau था. जनरल tau तो strain energy per unit volume is tau square upon 2g. जनरल रिलेशन याद रखना फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए. अगर tau max दिया है then the strain energy per unit volume is tau max का whole square डिवाइड बाई 4g. मैक्सिमम के साथ 4g आता है, नॉर्मल के साथ 2g आता है. दिस इज द मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 4g. ये सब सॉलिड शाफ्ट के लिए, ये दोनों चीजें मैंने बताई आपको सॉलिड शाफ्ट के लिए. बट इफ द शाफ्ट बिकम्स hollow, if the shaft become hollow, then in case of hollow shaft, the energy upon volume, this will become tau max का whole square upon 4g. This is r naught square. इसको सही से लिख लेते हैं. दिस इज आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर. दिस इज आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, विच इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ अ हॉलो शाफ्ट. हॉलो शाफ्ट पे आर नॉट प्लस आर आई अपॉन आर नॉट स्क्वायर ज्यादा होता है सॉलिड शाफ्ट की कंपेरेटिवली. ये भी कह सकते हो दिस इज डी नॉट स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर अपॉन डी नॉट स्क्वायर टाइम्स ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द solid shaft, which is the hollow shaft. That's why we use hollow shaft in all our structure, because it can handle more work, it can handle more energy. Okay, so this is the basic of torsion. Now in torsion there exists a case of series and parallel connection of the shaft. This is the series and parallel connection of the shaft. Series connection of the shaft. Series connection की अगर बात करनी है, let's consider a shaft which is a shaft like this. This is one shaft. This is another shaft. Both of these shafts are connected in series. मान लो ये दोनों शाफ्ट जो हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं आपके पास. These are the two shafts which you have and both of them are connected in series. ये शाफ्ट का पोर्शन अलग हो गया, इसको इसी में होना चाहिए. और ये कुछ ऐसा है. This is the shaft. फिर अलग हो गया, इसको जोड़ देते हैं लोग. अब सही है. ये हमारे पास शाफ्ट है. These two shafts are connected in series. This is shaft number 1 and this is shaft number 2. ये पहला हो गया. This is shaft number 2. इस शाफ्ट की एक एक्सिस है. Let's say this is the centroidal axis, which is the basically longitudinal centroidal axis. Along this centroidal axis, you have applied a torsion. You have applied a torque. The torque is been applied like this. This is the torque which you have applied T. Now, as these shafts are connected in series, so you can say that you can actually see that this torque T will be same for this as well as it will be same for this. दोनों के लिए same जाएगा. It means that if this is shaft number 1, then T1 is equal to T2. This will be equal to T if the shaft is in series. समझ में आ गया? But the rotation of this will not be equal to the rotation of this. दोनों अलग अलग rotate कर रहे होंगे, दोनों का diameter अलग है, shape अलग है, system अलग है. It means that if this is portion A
this is portion B, then this is portion C, then you can say that theta AC, यहाँ से fix कर दो इसको, theta AC will be equal to theta AB plus theta BC. This will be the total angle, total rotation, which you can say that this is equal to theta 1 plus theta 2, which is equal to T into L1 upon G into IP1 plus T into L2 divided by G into IP2. दिस इज द थीटा ए सी. ये कहाँ से आया? आपको मैंने लिखाया था टाउ अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन आई पी, दिस इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल. यहाँ से आपने क्या निकालना है? यहाँ से आपने निकालना है थीटा. थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल डिवाइडेड बाई जी इंटू आई पी. वही ये लिखा है आपके थीटा वन प्लस थीटा टू. तो इन केस ऑफ सीरीज द टॉर्क रिमेन सेम but the rotation is added up. Rotation is added up in case of series connection of the shafts. Now let's consider the parallel connection of the shaft. What actually the parallel connection of the shaft is? If you want to see that the parallel connection of the shaft, parallel connection of the shaft, parallel connection का मतलब होता है एक shaft के ऊपर दूसरा shaft है, which are in parallel connection. For example, let's take an example of this shaft. ये हो गया आपका एक शाफ्ट, जैसे शाफ्ट नंबर 1. इस शाफ्ट नंबर 1 के अंदर एक शाफ्ट नंबर 2 है, जैसे दिस इज शाफ्ट नंबर 2. तो आपके पास इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते हो तो यू हैव टू शाफ्ट्स. वन शाफ्ट इज दिस, इसको ब्लैक से देखेंगे तो अच्छा दिखेगा. दिस इज वन शाफ्ट नंबर 1, दिस इज शाफ्ट नंबर 2. ये दोनों यहाँ सेंटर के अबाउट ट्विस्ट कर रहे हैं. यू हैव अप्लाइड अ टॉर्क हियर. आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपने सेंटर में टॉर्क लगाया है तो ये टॉर्क बेसिकली दोनों का अलग अलग होगा. इसका T2 है और इसका T1 है अगर, तो टोटल टॉर्क जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2. पूरा घुमाना है ना. बट इन दिस केस द बेसिक रोटेशन विल बी सेम, क्योंकि रोटेशन एक ही एक्सिस पे हो रहा है. इट मीन्स दैट theta 1 will be equal to theta 2. So you can say that if their shafts are connected in parallel, then the torque will be added up, but the theta remains सेम. ये सेम हो जाता है क्योंकि टॉर्क ऐड हो रहा है तो थीटा सेम होना ही होना है. तो दिस इज द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. Also there is a relation in case of torsion, which is basically the strain energy. The strain energy in case of torsion, this is equal to, जैसे वहां पे लिखा था याद है, p स्क्वायर l अपॉन 2a. वैसे यहाँ पे है t स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 GIP. This is T square L divided by 2 GIP. This is the strain energy in case of torsion. This is the total strain energy. You can say that total. This is T square L upon 2 GIP. This is the total strain energy present in case of torsion. Total strain energy. Now there is a certain relation between power, torque, and all these things. That relation says that the power required to rotate a shaft, पंखा चलाने के लिए जो पावर चाहिए, this is equal to 2 pi n into t divided by 60, where n is the number of revolutions per minute. कितना revolution per minute घूम रहा है. t is the torque or the torsion. Pi, rest of the things you already know that. It means that the power required is this much. If you will use the value of t here in kilonewton meter, then you will get the power in kilowatt. If you will use the unit in Newton meter, then you will get the power in watt. So you have to remember these things. जिसमें भी आप यूज कर रहे हो, according to that you will get the answer. ठीक है. Next, तो ये जो पावर का केस हो गया. Now let's take an example of the question from the topic which we have covered. Let's take the example and one by one let's solve the question. Because in torsion they are asking different objective questions of different types, so देखना पड़ता है टॉर्जन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग दैट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट you have a composite shaft consists of
सॉलिड ब्रास रॉड या वे कंपोजिट शाफ्ट, एक तो सॉलिड ब्रास रॉड है 32 mm डाटा which is 32 mm dia which is encased inside a steel tube. एक स्टील ट्यूब है और एक कॉपर रॉड है। मान लो स्टील ट्यूब है आपके पास एक, दिस इज अ स्टील ट्यूब ऑफ कलर, मान लो दिस इज हैविंग दिस कलर, दिस इज अ स्टील ट्यूब, you have a steel tube, this is your steel tube, inside this steel tube you have a brass rod इसके अंदर एक फिक्स है, let's say this is a brass rod which is fixed inside this steel tube, ये इसके अंदर फिक्स है। they're saying that in this particular question they're saying that the brass rod is having a 32 mm dia, the diameter of the brass rod is 32 mm, this is the diameter of the brass rod, and the internal dia of the tube is 32 mm, obviously बात है इसका internal dia tube का भी 32 mm होगा, but the external dia of the tube is, they're saying that the external dia of the tube is 50 mm, the external dia for the tube is 50 mm, तो ट्यूब का जो एक्सटर्नल डाया है दिस इज, दे आर सेइंग दैट दिस इज 50 mm, फाइन। इफ बोथ द शाफ्ट्स आर फर्मली बॉन्डेड, देखो देख सकते हो अभी कनेक्टेड एंड पैरेलल हो गया, इफ द बोथ द शाफ्ट्स आर कनेक्ट फर्मली बॉन्डेड एंड कंबाइंड असेंबली सब्जेक्ट टू अ टॉर्जन ऑफ 1000 न्यूटन मीटर, उन्होंने कहा है ये दोनों एकदम से बढ़िया करके अटैच हैं, और जो टोटल टॉर्क आप इस पे लगाते हो सिस्टम पे, दैट टॉर्क इज 1000 न्यूटन मीटर, ये आपको बता दिया गया इतना टॉर्क आप इस पे लगा रहे हो, एंड दे आर सेइंग दैट estimate the maximum shear stress, estimate the maximum shear stress develop in the brass and estimate the maximum shear stress develop in the steel. We have to calculate the maximum shear stress for both of these things. ये बीच वाला है आपका brass and this is your steel, तो steel और brass में दोनों निकालना, आपके पास एक जनरल रिलेशन आपको पता है that tau upon r is equal to t upon ip, this is equal to g theta upon L. This is the relation which we have already. Now we have to calculate the maximum shear stress. To calculate the maximum shear stress, we know that tau max will be equal to T upon Zp, which is equal to 16T upon pi d cube in case of the solid shaft, which is basically brass. तो मान लो brass में गया है T1 और brass का डाया है D1. This will be the tau max, which is the 16T1 upon pi d1 का whole cube. This will be the case of solid shaft, and similarly in case of, ये पहला हो गया solid shaft मतलब brass का, in case of steel the tau max will be, in case of steel the tau max will be, you can say that this is 16 into t, वही जो भी हमने लिखा था, divided by pi of d04 minus di4 into d0. This will be the case of
This is plus, this is T2, this is T was T1. This is a case of, you can say, the tube or the steel tube. So basically we have to calculate tau max. For the calculation of tau max, what we have to calculate is T1 and T2. T1 T2 एक बार मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं. तो basically we have to calculate T1 and T2. So to calculate the value of T1 T2, one thing we know that as these shafts are connected in parallel, तो parallel means पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में एक चीज क्लियर होती है कि आपके पास जो ट्विस्ट होता है वो सेम रहता है. थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, बट यू कैन से दैट थीटा ऑफ ब्रास की जो रॉड है, दिस विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ द स्टील ट्यूब. दिस विल बी सेम. एज द थीटा इज सेम, इट मींस दैट टॉर्क ऑफ ब्रास इनटू लेंथ अपॉन जी ऑफ ब्रास इनटू आई पी ऑफ ब्रास, दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ कॉपर into L divided by G of copper into I P of copper. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें एक चीज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी दैट द shear modulus of steel is equal to 2 times the shear modulus of brass. This is given to us. What we are using some notation 1 for the brass and notation 2 for the steel. It means that this is T1 into L upon G1 into IP1. This is equal to T2 into L upon G2 into IP2. This L will get cancelled out. You know that आपको IP1 और IP2 का रिलेशन पता है, आपको G1 और G2 का रिलेशन यहाँ पे गिवन है. दिस इज G2 is equal to 2 times G1. This is also given to us. So here from this relation you can calculate the relation between TB and TS. That relation between TB and TS सारी वैल्यू लगा दोगे. इसका रेशियो पता है, IP1 और IP2 पता है. IP1 क्या है? IP1 is equal to pi into D4 divided by 32. IP2 क्या है? This is equal to pi upon 32 d नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4. इसमें अगर आप देखते हो डी नॉट की वैल्यू, दिस डी की पावर 4 इज इक्वल टू 32 की पावर 4. ठीक है. सिमिलरली दिस पर्टिकुलर डी नॉट इज अगेन, दिस इज 50 की पावर 4 एंड दिस इज 32 की पावर 4. You will keep the value and calculate the ratio between torque of brass TB. TB is 1 divided by torque of steel. This ratio will come to be 0.1. When you will calculate, you will get this value equal to 0.1. Now you know that as T1 plus T2 is equal to 1000 Newton meter, it means that now you can calculate the value of TA and TB or T1 or T2. You can calculate the value of T1 and T2. पुट करोगे 1000 न्यूटन मीटर है, इसको न्यूटन mm में कर लेना, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं सब mm में की हैं. जब आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू दैट T1 इज इक्वल टू, T1 आपको मिल जाएगा ब्रास का 91.57 न्यूटन मीटर. सिमिलरली यू विल गेट T2 इज इक्वल टू 9908.43 न्यूटन मीटर. सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चंस. न्यूटन मीटर you will get both the torques, and when you will put these torques here in these relation, we have the relation also. यहाँ पे उठा के T1 पुट कर दो और यहाँ पे उठा के T2 पुट कर दो, and you will put these two values, you will get tau max for the brass equal to 14.21 Newton per mm square. Similarly you will get tau max for the steel tube is equal to 44.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर. दिस विल बी द रिजल्ट. समझ में आ गया है? पैरेलल में थे, इसलिए दोनों का थीटा बराबर था और टॉप दोनों को ऐड कर दिया. थीटा बराबर रख के सबसे पहले रिलेशन निकाल दिया टॉप में, उसको यूज करके दोबारा से आपने कैलकुलेट कर दिया है. समझ में आ गया है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अनदर क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2 they are saying that, देखो ये क्वेश्चन आपने उसमें भी किया है, that you have a bar, you have a bar. In this bar you have supports at both the ends, you have fixed support at both the ends. This is not a bar, this is actually, you can say that it's the shaft. You can say that this is the shaft. This is the shaft. This is a shaft. और ये शाफ्ट जो है, this shaft is fixed at both the ends. ये दोनों एंड से आपने इसको फिक्स कर रखा है वॉल में अच्छे से. This is fixed at both the ends. Now after fixing the shaft, in the question they are saying that for this shaft there is a section. This is the section here.
And in this section, there is the presence of a torque T here in this direction. There is the presence of torque T which is acting in this direction. They are saying in the question, and they are saying that when the torque will act in this direction, and there will be the development of reactions in both of these supports. Let's say these supports are RA and RB. This reaction is RA and this reaction is RB, and these supports are, this is A and this is B. And the length will be in this portion is A, the length will be in this portion is B. याद करो बाहर का क्वेश्चन जो हमने किया था, आपसे कहा जाता है दैट कैलकुलेट द टॉर्सनल रिएक्शंस एट सपोर्ट ए एंड बी. अभी ये फिक्स है अगर शाफ्ट और इसे घुमा रहे हो बीच से पकड़ के, इसका मतलब सपोर्ट इसको अपोज करेगा, ये घूमना नहीं चाहता. जब सपोर्ट अपोज करेगा तो सपोर्ट दूसरा टॉर्क जनरेट करेगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड टॉर्क. अभी आर ए और आर बी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया है, तो सेम क्वेश्चन इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे वहाँ करते थे, या इसको टी ए टी बी मान लो, जैसे मन से मान सकते हो. दिस टी विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी. आर ए को टी ए में लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू टी ए, दिस इज इक्वल टू टी बी, क्योंकि टॉर्क की बात कर रहे हैं. तो टी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, दिस वी नो दैट. नाउ वी आल्सो नो दैट द टोटल थीटा फ्रॉम ए टू बी, इसको ले लो सी, विच इज इक्वल टू थीटा ए सी प्लस थीटा सी बी. दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों टाइप से फिक्स है. सेम वही चीज़ है, डिफ्लेक्शन लिखते थे पी एल अपॉन ए, समेशन लिख के जीरो रखते थे, वही सेम चीज है here. The theta AB is equal to theta AC plus theta CB and the total summation is 0. So it means that this theta AB is 0. It means that theta AC, theta मतलब TL upon GIP. यहाँ से यहाँ तक में जो force है, that is this force which is most important force, which is TA into A divided by GIP. अब इसके ऊपर आ गए तो इस डायरेक्शन में प्लस TA minus T into B divided by GIP. This is what? This is equal to 0. Then you will keep this equal to 0. You will get TA is equal to T into B divided by A plus B, which is equal to TB upon L. And similarly, TB is equal to TA upon L. याद करो बाहर में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, सेम आंसर आए थे, बस T की जगह वहाँ पे फोर्स था, P था. याद करो बाहर के केस में. तो दिस इज द केस ऑफ torsion. This is another torsion question which can be asked in the examination. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वो कई बार पूछा जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रख सकते हो. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं which is a very important type of question which I can expect in the examination. तो एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, which is an important question. So in this question they are saying that there is a shaft. एक आपके पास शाफ्ट है, सबसे पहले शाफ्ट बना लेते हैं. ये मेरे पास शाफ्ट है, इस शाफ्ट में इधर सर्कल भी बनाऊं, ये हमारे पास शाफ्ट है. and the question they are saying that this shaft is having a length L. This is the length L of the shaft. is subjected to a uniformly distributed torque in its entire length. पहली बात तो यहाँ से फिक्स किया हुआ है, इस शाफ्ट के पास एक सर्टेन एक्सिस है जो इसमें घूम सकता है. दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. इसके अबाउट ट्विस्ट करा सकते हो आप इसको. तो इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट दे कैन टेस्ट इट हियर. इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट द शाफ्ट इज हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क ओवर इट्स एंटायर लेंथ. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क कुछ ऐसे करके दिया हुआ है. दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क which is present over this particular shaft. टॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क. दिस इज a uniformly distributed torque which is present over here, and it is having a unit of T kilonewton meter per meter. This is the presence of torque here. ये टॉर्क आपको दिया हुआ है. This is the reaction. In this question they are saying that calculate the twist angle at the free end B. This is end A and this is end B. This is end A, this is end B. They are saying that इसके ऊपर एक टॉर्जन लगा हुआ है, टॉर्क लगा हुआ है, which is a uniformly distributed torque UDT. आपको बोला है इसके ऊपर B है पॉइंट पे, आप एंगल बताओ कितना होगा. आपको एक चीज़ यहाँ पे पता है कि जैसे वहाँ निकालते थे डिफ्लेक्शन निकालते थे तो क्या करते थे, स्ट्रेन एनर्जी लिखते थे, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे, आपको डिफ्लेक्शन मिल जाता था. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ टॉर्शन इज टी स्क्वायर्ड और डी एक्स डिवाइड बाई 2 GIP. याद है
इस तरीके से लिख सकते हैं. लेट्स से दिस इज du. लिख सकते हैं. इसका मतलब अगर मैं इसे वहाँ पे फोर्स को डिफरेंशिएट करते थे, एनर्जी को डिफरेंशिएट करते थे फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको डेल्टा मिलता था. यहाँ एनर्जी को फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो थीटा मिलेगा. दिस इज 2t डॉट dx divided by 2gip. This will get cancelled. I will get t dot dx divided by g dot ip. It means if I want to calculate the value of theta, I have to integrate this particular value t dot dx divided by g dot ip from 0 to L. I have to integrate it from 0 to L. क्लियर है. अब पॉइंट ये होता है यहाँ पे जो t है एक्चुअली वो आप याद करो, आप क्या लिखते थे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पी एक्स लिखते थे. एक्स सेक्शन लेके आपने यहाँ से मान लो x मान लिया है, so this is x. Then at this point, let's say this is tx. This is tx. At this point, the torque is tx, which is the distance of x from the fixed support. Now, if this is tx, और ये ऐसे भी घूम रहा है, it means in this opposite direction there will be the presence of ta, an opposite force or opposite reaction. अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो in this direction there will be the presence of tx, and because of this tx, this particular ta will oppose this section and it will develop a reaction ta. It means that the total tx here, this will be equal to ta minus this is small t into x जो यहाँ present है, ta minus small t into x. This is dot dx divided by 2 तो cancel होगा, divided by gip, g into ip. This is ta minus t dot x dx upon gip. Now what you have to do, you have to integrate it from 0 to L. When you will integrate it from 0 to L, you will get theta is equal to t into L square, small t into L square divided by 2gip. This will be the value of theta at the free end. कैसे करना है, सबसे पहले जैसे वहाँ करते थे, first of all you have to consider the section x at a distance of some distance from the support. x distance पे आपने एक section ले लिया, उस section पे मान लिया टी लग रहा है आपके पास जो टॉर्जन है. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर ये टी शिफ्ट होगा तो टोटल टॉर्क जो ये पूरा सेक्शन दे रहा होगा दैट विल बी टी स्मॉल टी इंटू एक्स. तो जो नेट टी आ रहा होगा इस पॉइंट्स में ये टी ए माइनस स्मॉल टी इंटू एक्स होगा, विच विल बी द नेट टी एक्स विच इज डी एक्स इंटू ऑन टू जी आई पी, जैसे आप करते हो हमेशा टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू जी आई पी. यहाँ पे अपने डिफरेंशिएट करके इसका थीटा निकाल लिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया, वैल्यू पुट करी, यू विल गेट द आंसर. दिस इज द जनरल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो ध्यान रखना, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क का केस बोलते हैं. पावर अगर आपसे पूछा जाएगा तो पावर का मतलब होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60. कहीं भी आपको टॉर्क दे रखा हो, टाउ दे रखा हो, टाउ से आपको टी निकालना आता है कैसे, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन आई पी. एक बार टी आ गया तो फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द पावर. पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60. You can calculate the power by using this particular relation. So this is the basic topic which is torsion. So in torsion this many questions can be asked. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं. इसके अलावा कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझ चुके हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एंड आई विल चेक दोस क्वेश्चन एंड गेट बैक टू यू आफ्टर दैट. देयर आर सम प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो व्हिच आई हैव टू चेक. आई हैव ऑलरेडी चेक्ड सम ऑफ देम, but I'll be like uploading the solution with everything whenever I will check all of the copies. So till then, keep on learning, keep on revising. It's AS Pandit signing off. Take care. Bye bye.